Hello everyone, welcome back to your Super20 Institutes, and I'm here again to teach you physics here. So before starting our new topic, we will see what we have done yesterday in our previous class. Okay, now let's come to the points. So first of all, we will see what we have done in our first unit of electrostatics. So our first subunit name is the electric charges and field here. Clear? So in this chapter we have done what is the meaning of the electric charges, what do you mean by the charge here and its general introduction, some basic properties, and further some small examples which is based on these concepts. Clear? Now the main concept this we have done in our first subunit, that is the electric charges and fields here, that is the Coulomb's law. What is the Coulomb's law here? Yes, who will tell me? Coulomb's law है आपके पास, that is F is equal to F E भी बोल देते हैं इसको because it is the electrostatic force and it is equal to your K Q1 Q2 divided by R square. So this is your electrostatic force, and we have done some applications which is based on this amount of the force here, as well as we will see what is the value of the K here, where K is equal to 9 into 10 raised to power 9, and its unit is Newton meter square per Coulomb square. Further, we have done some small examples of based on this, as well as some applications, and we have done its limitations. So what about its limitation? Its limitations which is applicable only for a point charges. And second thing, ये जो है आपके पास when all the charges they are placing at a rest positions only, then this force is applicable, this law is applicable. That means when both the charges are in a rest positions or in a rest position, one is in a rest and second one is in a motion here, then we are using the Coulomb's law. अब हम क्या करेंगे, एक मेन एग्जांपल्स देखेंगे विच इज बेस्ड ऑन योर जेईई मेन क्वेश्चंस हैं, बट वो भी क्या है, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चंस है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग दिस. So first of all, I will write a one question here, you can see, and after that we will start the next one topic. Clear? So you will write the questions. If Q0 is slightly displaced, क्वेश्चन है that is the numerical और जेईई मेन का है ये आपके पास. So question you will write, if Q0 is slightly displaced along line joining, Q0 is slightly displaced along line joining 1 and 2 towards any of the charge, towards any of the charge show that Q0 execute SHM, that is simple harmonic motions, or find टाइम पीरियड को हम कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज विद द कैपिटल टी. अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, आपके पास एक Q0 चार्ज दिया हुआ है, वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो रहा है लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस. टू चार्जेस क्या है, फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज हियर, एंड सेकंड थिंग वी नीड टू फाइंड द Q0 व्हिच एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. कि Q0 जो आपके पास चार्ज है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है वहां पे. एंड सेकंड थिंग्स वी नीड टू फाइंड द टाइम पीरियड आल्सो. अब ये तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, अब हमने क्या करना है, इसको एक मैथमेटिकल वे से हम इसको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग वन डायग्राम हियर. अब जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आप उसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे. हियर टू चार्जेस यू आर कंसीडरिंग हियर, Q1 and Q2 here, these are the two charges, but its value or amount will remain the same. पॉजिटिव चार्जेस है, इसको फर्स्ट बोल दिया आपने, इसको सेकंड बोल दिया. लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर आप क्या कर रहे हो, Q0 चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर रहे हो. सपोज दैट ये आपके पास क्या है, Q0 चार्ज है. क्लियर? Q0 चार्ज को आपने उसको प्लेस किया वहाँ पे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, यू शुड कंसीडर इट बाय योरसेल्फ. इफ इट इज गिवन इन योर क्वेश्चंस देन यू विल टेक दैट वन.
Yeah, otherwise you will take its distance is 2a. 2a is the distance. This is your first charge and having its value is q, and second charge having its value is plus q again. And we are considering here the q node charge which is placing on the line joining between the two charges. अब क्या कर रहा है ये क्यू नोट चार्ज है वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो रहा है. अगर वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि ये भी आपके पास क्या है क्यू नोट भी एक पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे. अगर ये रिपेल करेंगे दैट मीन्स ये चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया. यहाँ पे ये प्लेस हो गया. क्लियर. यहाँ पे ये प्लेस हो गया. दैट मीन्स आपके पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज विच इज at 1 here. So similarly जो Q2 चार्ज है वो सेकेंड पोजीशन पे प्लेस है. जब Q0 उसकी तरफ मूव करेगा पॉजिटिव के बीच में अगेन उसके बीच में क्या हो जाएगी रिपल्शन हो जाएगी. रिपल्शन होगी तो वो भी Q2 चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये आपके पास कौन सा फोर्स रहा F2 फोर्स रहा. अब क्या है जो आपके पास Q नोड है वो अपनी पोजीशन से क्या किया उसने खुद को डिस्प्लेस किया. तो उसका डिस्टेंस क्या रहा. सपोज दैट दिस इज द x हियर. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया स्मॉल x. बट Q नोड को हमने सेंटर में प्लेस किया है और टोटल डिस्टेंस इनके बीच का क्या है 2a है. तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस आप इसको क्या कंसीडर कर सकते हो. दिस वन इज a एंड दिस वन इज अगेन a हियर. क्लियर. तो ये आपके पास क्या रहा इसका टोटल डिस्टेंस. स्मॉल डिस्टेंस व्हेन दिस Q नोट इज मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड चार्ज then it cover a distance is small x and the force applying due to the F1 is F1 and this is your F2 that is due to the second charge. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है नेट फोर्स ऑन द Q नोड आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स ओन पोजीशंस. कि आपके पास क्या है Q नोड के ऊपर टोटल फोर्स कितना रहेगा जब वो क्या कर रहा है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा है. ओके नाउ लेट अस सी वेयर x is very much small. ये देखिए x is very much small. अब आपने क्या करना है नेट फोर्स फाइंड आउट करना है. नेट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस ऑफ F1. सेकेंड फोर्स में से आप क्या करोगे उसको फर्स्ट फोर्स को माइनस करोगे क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आपने करा है. टोटल फोर्स किसके इक्वल रहता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस है. बट यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपने टोटल अमाउंट ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करना है. वो डिस्प्लेस हो रहा है तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ द फोर्स रहेगा F2 माइनस ऑफ F1 हियर क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है. तो आप इसको क्या लिख सकते हो F नेट और इज इक्वल टू F2 माइनस F1. सो F2 की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी K यस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. हियर यू नीड टू यूज अ R. क्लियर. एंड फोर्स यूज कर रहे हो आप F2. F2 का फोर्स आपने फाइंड आउट करना है. तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा इसके बीच का डिस्टेंस दिस वन. टोटल डिस्टेंस इज a एंड स्मॉल डिस्टेंस इज x क्योंकि जब पार्टिकल आपका इस पोजीशन पे आया तो इसके ऊपर सेकंड फोर्स अप्लाई हो रहा है. दैट मींस ये डिस्टेंस आपके पास क्या रहेगा a माइनस x. इज इट क्लियर. Q नॉट इज डिस्प्लेस फ्रॉम देयर ओन पोजीशन. जब वो डिस्प्लेस कर जाता है तो वो स्मॉल डिस्टेंस रह जाता है. यही स्मॉल डिस्टेंस आपके पास क्या है a माइनस ऑफ स्मॉल x. दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास r की वैल्यू क्या रहेगी. यू कैन राइट इट हियर एज इट इज डायरेक्टली a minus x and its whole square. Is it clear? Second is F1. Now we need to find the similar value of the F1 here. F1 is again K Q1 Q2 divided by R square. Now we need to use a R. R you can see here Q node is shifted towards this point. क्वेश्चन में लिखा है स्लाइटली डिस्प्लेस. दैट मीन्स आपने ये वाली पोजीशन को कंसीडर करना है दिस वन. तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या रहेगी. दिस स्मॉल डिस्टेंस इज a and this another small distance is x. That means the total distance becomes a plus x. Clear. And its whole square because हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसके डिस्टेंस का स्क्वायर कर रहे हैं. Now we need to use the simple equations to solving this. We also know that Q1 is equal to Q2 which is equal to Q here. तो आप इसको क्या लिख सकते हो K Q square divided by a minus x and its whole square minus K again Q square divided by a plus x and its whole square. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है सिमिलर टर्म्स यू कैन राइट इट आउटसाइड. आपने सिमिलर टर्म्स को क्या ले लिया आउटसाइड ले लिया. वेट वन थिंग मोर. हियर इज Q1 and Q2 को आप क्या कंसीडर करोगे Q नॉट चार्ज. दिस इज योर Q नॉट and this is your again
Q0 and this is Q2. अब आपके पास क्या रहेगा Q and Q0 here and this is also Q and Q0 क्योंकि हम क्या कर रहे हैं Q0 को ही यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो फर्दर आपके पास क्या रहेगा K into Q0 और inside of the bracket you will write it like this a minus of x and its whole square divided by a plus x and its whole square. Now next is your mathematical equations. You can solve it easily by your own method. आप कैसे इसको solve करोगे? ओके मैं एक फिगर रब कर रही हूँ। आई थिंक आप सभी को ये समझ आ गई है। टू चार्जेस आपने प्लेस करे हैं, सेंटर में क्यू नोट चार्ज को प्लेस करा है। सो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या रहेगा? यू नीड टू फाइंड हियर द एफ नेट फोर्स। एफ नेट फोर्स इज के क्यू नॉट एंड हियर यू विल राइट द a माइनस ऑफ x एंड इट्स होल स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि ये आपके पास क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। जब आप इसका एलसीएम लोगे देन यू विल गेट द टर्म इज लाइक दिस। Yeah. In the next step you will open its whole square. पता है ना मुझे तो whole square का formula? What is the formula of the whole square here? That is a square plus b square minus 2ab and for minus a square plus b square minus 2ab. So same things you are using here, then you will get the answer. A square plus x square plus 2ab again minus a square minus x square because outside is negative sign and you will write it 2ax here again. So similar terms can be cancelled out with the opposite sign, then you will get the final result, that is 4ax and divided by a square minus x square and its whole square. Clear? This is your net force. Net force. In the next step you need to find out, that is if a is very much small, sorry x is very much small as compared to a. आपने देखा है अपनी फिगर में जो x है वो स्मॉल डिस्टेंस से वो डिस्प्लेस हो रहा है। सो यू कैन राइट इट लाइक x इज लेस देन a, दैट मींस x स्क्वायर कैन बी neglected. If x square can be neglected from here, then what is the final result? आपने x square को यहाँ पे क्या किया, neglect कर दिया, then you will get the result is, that means f net is equal to your q naught and here you will write 4ax and divided by x square can be neglected, a square and it's raised to the power square root. Again q naught 4ax divided by a raised to the power 4, power can be cancelled out from here and the final result become 4x divided by a cube. अब हमने क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के साथ इसको कंपेयर करना है। हमें पता है जो चार्ज है वो स्मॉल डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे ही वो डिस्प्लेस हो रहा है तो सिमिलर चार्जेस उसको रिपेल कर रहे हैं। अगर सिमिलर चार्जेस उसको रिपेल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन को फॉलो कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन को फॉलो कर रहा है तो वही मोशन जो किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को। एंड this net force you can write it like this, that is q naught 4 you will write in the front and here you will write the x here. Clear? So you should compare this value with the simple harmonic equation. So what is the value of the simple harmonic equation? This you have done in your 11th also, that is force is equal to minus of kx, kx की वैल्यू होती है। जब आपने इसको इसके साथ कंपेयर किया देन यू विल गेट द रिजल्ट k इज इक्वल टू 10 टाइम्स k डैश कंसीडर कर लीजिए। इज इट क्लियर? दैट मींस द k डैश इज इक्वल टू, दिस इज योर अनदर कांस्टेंट 4k q naught q divided by a cube. So this is the value of your constant here. Now the simple next term is this, we need to find its time period. That means we should know the value of the time period. तो time period का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, 2 pi square root of m divided by k here. Clear? So m divided by k here, that means 2 pi and you will put the value of the k here directly from here, that is the k dash here. So m and you know जो न्यूमरेटर है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, as well as a cube you can write in the upper dash. So this is your final
टाइम पीरियड। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपने सिर्फ क्या किया, दो चार्जेस को लिया, एक क्यू नॉट जो चार्ज है उसको सेंटर में प्लेस करा और उसकी बजाय जो मोशंस है वो आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशंस को रिप्रेजेंट करने के बाद हमने उसके ऊपर क्या किया, टोटल फोर्स को फाइंड आउट किया। जो टोटल फोर्स है आपके पास वो आपके पास क्या है, F2 माइनस ऑफ F1। अगेन वी आर यूजिंग हियर द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले को यूज किया, मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके बाद आपने इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ उसको क्या किया, कंपेयर किया। आफ्टर द कंपेयरिंग वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ द k dash, then you will put simply the value of the k dash in the टाइम पीरियड फॉर्मूला ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपने उसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज को पुट करना है, देन यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट हियर। ओके, so now let's come to the point. Our next topic is, that is permittivity or relative permittivity. Clear? अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या रहेगा, परमिटिविटी एंड relative permittivity। आई थिंक आपने ये नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है देन अभी सुन लीजिए। परमिटिविटी का सिंबल होता है एप्सिलॉन। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल होता है एप्सिलॉन। हम इसको इस सिंबल के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। परमिटिविटी का मीनिंग क्या होता है, दैट इज परमिट करना, अलाउ करना। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, दैट इज इट्स मीनिंग इज टू परमिट और टू अलाउ। किसी चीज को अलाउ करना, उसमें अपनी फील्ड को अलाउ करना है। और नाउ यू कैन सी, वी आल्सो नो दैट कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। अब मैंने आपको वहां पे कूलम्ब्स को में बताया था कि जो K की वैल्यू है वो क्या है, इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ एज वेल एज K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर? तब मैंने ये भी बताया था कि K की वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन, हम इसको यूज करेंगे, बट ये टॉपिक हम नेक्स्ट आगे स्टेप में करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। क्लियर? इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। एज वेल एज इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ द K हियर, दैट मींस F इज इक्वल टू, योर वैल्यू इज F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यूज को यूज करना है कि अब आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है वो इस टर्म में, एप्सिलॉन की टर्म में भी एग्जिस्ट करती है। फर्दर दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू इज अगेन 9 × 10⁹ क्लियर? सो अब हमें क्या देखना है, if you can see this result, if epsilon is increases, अगर आप epsilon की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, then force can be decreased. Epsilon increase, force can be decreased. क्यों? Because force is inversely proportional to epsilon here. कि ये जो आपके पास फोर्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन के अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस वो क्या करेगा, ऑपोजिट इफेक्ट उसके ऊपर क्रिएट करेगा। अगर आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज करती है तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स है वो आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर यही केस ऑपोजिट हो जाता है, if epsilon decreases then force can be increased. Is it clear? And epsilon, that means minimum for free space for vacuum as well as air. जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू आपके पास क्या रहती है, हमेशा मिनिमम। इसके लिए फॉर फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम एंड फॉर एयर, इन थ्री टर्म्स के लिए आपके पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, मिनिमम रहती है। दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, epsilon is minimum for the free space, for air as well as for the vacuum here. And one thing more, that means the K can be depends upon the medium. हमें पता है कि epsilon जो है वो
को क्रिएट कर रहा है। ओके, यू कैन सी परमिट का मीनिंग क्या बताया मैंने? यस, दैट मीन्स टू अलाउ और परमिट करना, परमिटिविटी है ना वहां पे। परमिटिविटी का मीनिंग क्या है? दैट मीन्स टू अलाउ एज वेल एज टू परमिट देयर ओन फील्ड, कि एप्सिलॉन जो है वो अपनी एक ओन फील्ड को क्रिएट कर रहा है बिटवीन द टू चार्जेस। अब चार्जेस आपके पास क्या है? Q1 एंड Q2 है, इनके बीच में आपस में रिपल्शन लग रहा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो तो उसकी पोलैरिटी डिसाइड करती है। अब बाहर से एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज द एप्सिलॉन हियर, वो क्या करेगा? अपनी फील्ड को परमिट करेगा, अपनी फील्ड को अलाउ करेगा कि इनके दोनों के बीच की इंटरेक्शंस को क्या करे? कट कर दे। तो ये इसका क्या है? मेन वर्क। दैट मीन्स epsilon to permit their own field, create their own field. That means it permit its own field to decrease the interaction fields between the charges. आप इसको क्या बोलते हो? It permits their own field to decrease the interaction, to decrease the interaction between the two charges. Is it clear? Epsilon, the main work of the epsilon is to permit their own field to decrease the interactions between the two charges. जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, उसके इफेक्ट्स को epsilon जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, उसको कट ऑफ करेगा। तो इसको आप क्या बोलते हो? दैट इज द परमिटिविटी। क्लियर? एंड k कैन बी डिपेंड्स ऑन द मीडियम। k की वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon which is equal to 9 into 10 to the power 9 and depends upon मीडियम, कि उसका मीडियम कौन सा है? एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, गिलास है या समथिंग एल्स, कौन सा मीडियम आप कंसीडर कर रहे हो, उसके ऊपर आपके पास k की वैल्यू जो है वो क्या करेगी? डिपेंड करेगी। क्लियर? नोट डाउन कीजिए यहां तक। ओके, सो नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं? इफ वी आर कंसीडरिंग epsilon naught for the free space, yeah, epsilon naught for free space, then what is the value of the force here? F naught हो जाएगा, F naught हुआ, then we will write the values like this: 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square. अब force भी आपके पास क्या हो जाएगा? That is F naught and similarly Q1 Q2 divided by क्या आ गया आपके पास? r square. Now what is the value of the epsilon naught which you need to remember? Here epsilon naught is, this is a constant value or a standard value, 8.854 into 10 is to the power, that is minus 12 and its units become coulomb square per Newton per meter square. Clear? अब आपने इसके यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? एप्सिलॉन नॉट को इस साइड शिफ्ट कर दो, एफ नॉट को इस साइड शिफ्ट कर दो। क्लियर? Q1 Q2 का क्या आ जाएगा? सिंबल कूलम्ब स्क्वायर। R जो है वो आपका डिनोमिनेटर में है, F नॉट भी आपका डिनोमिनेटर में है। और फोर्स के यूनिट आपके पास क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं, और डिस्टेंस के यूनिट आपके पास क्या होते हैं? मीटर होते हैं। तो आप उसको क्या लिख सकते हो? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसको फिर भी नहीं समझ आ रहा है, you write it in one step, क्योंकि यूनिट्स लिखना बहुत ही जरूरी है। epsilon naught is equal to 1/4 pi f Q1 Q2 divided by r square। इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो? इसके यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक यूनिट्स आप सभी को पता ही है। एंड सिमिलरली इफ वी आर कंसीडरिंग हियर epsilon m, इफ वी आर सेइंग कि ये जो आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी है फॉर अ मीडियम इफ इट इज ग्रेटर देन epsilon naught, कि जो आपके पास परमिटिविटी है फॉर द फ्री मीडियम उससे क्या होती है? वो ग्रेटर होती है। अगर वो ग्रेटर होती है, हमें पता है द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी, वो उसकी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर
that means F is inversely proportional to epsilon. इसको कंपेयर करके आप क्या लिख सकते हो, then F M is less than F naught. Clear? F M आपके पास क्या रहेगा, less रहेगा. That means force in any medium is less as compared to the force in free space. Force in any medium is less as compared to the force in free space. क्यों आया? Because F is inversely proportional to epsilon. Clear? Now the two constant terms which you need to remember कि epsilon की value जो है वो आपके पास water के लिए कितनी होती है approximately for water and epsilon for gas. Clear? ये आपने याद नहीं रखना है, just you need to one word which you need to remember sometimes आ जाता है. इसकी वैल्यू होती है approximately 7.12 and here is 3.01. Clear? So 7.12 into 10 to the power minus 10 and here is 10 to the power minus 11. Unit will remain the same. What is the unit? Coulomb square Newton meter square and Coulomb square per Newton meter square. ये क्या होती है, मीडियम्स बताया मैंने, दो डिफरेंट, वाटर मीडियम हो सकता है, गिलास मीडियम हो सकता है, उसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, इतनी होती है. बट फॉर द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट हियर 8.854 into 10 to the power minus 12. क्लियर? और ये वैल्यूज क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस. इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, द रिलेटिव परमिटिविटी. relative permittivity, yeah, which is denoted by the symbol of epsilon r. इसको हम क्या बोलते हैं, relative permittivity. अब relative permittivity आपके पास क्या है, अगर तो मैं one word में इसकी definition बोलती हूँ वो आपके पास क्या रहेगा, that is it is the ratio of, right, epsilon r equal to epsilon m divided by epsilon naught. That is, it is the ratio of the permittivity in medium to the permittivity in the free space. M का मीनिंग यहाँ पे क्या है, that is the medium, and naught का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इसको naught भी बोलते हैं, that is in the free space. तो ये क्या हुई, इसकी रेशियो हुई, और we can write it like this, or epsilon m is equal to epsilon naught into epsilon r. दोनों वे से लिखा जा सकता है कि आप मीडियम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो या एप्सिलॉन आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो. स्मॉल सा एग्जांपल देख लेते हैं. इफ एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर इज 81, एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर इज 81, व्हाट आई एम सेइंग कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर की वो 81 है, देन अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट यू विल गेट that is epsilon m is equal to, इसको यूज कर लीजिए, 81 into epsilon naught, कि जो आपके पास relative permittivity in the medium which is 81 times greater than the epsilon naught permittivity in the free space. So similarly अगर आपके पास और टर्म्स की वैल्यूज दी हुई हैं, ऐसे आपके पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है किसी की आपके पास relative permittivity की वैल्यू दी हुई है, then you can use the डायरेक्ट फॉर्मूला दिस वन एंड देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, कि आप उसकी वैल्यूज को बता सकते हो कि मीडियम में है जो एप्सिलॉन वो कितने टाइम्स ग्रेटर रहेगा आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी व्हिच इज लाइज इन द फ्री स्पेस. इज इट क्लियर? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो. तो सिमिलरली आप इसको कैसे लिख सकते हो, इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू 8, इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड आपके पास गिवन है नाउ is 8, then what is the relative permittivity in the medium? कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगेन epsilon m is equal to 8 times of epsilon naught. epsilon naught की वैल्यू यू कैन राइट इट 8.854 10 to the power minus 12. इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो और ये आपके पास क्या रहेगा, इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा. ऐसे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होती हैं, ये आपके पास क्या है 1 मार्क्स क्वेश्चंस में यूज किया जाता है. इज इट क्लियर? ओके, अब हमने क्या करना है, इन्हीं को यूज करके हमने फोर्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है कि फोर्स के
in terms of force, how you can write it like this. So we also know that in a free space we can write the value of the forces like this कि F naught is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. For medium we can write the value of the forces F m, यहाँ पे नॉट है वहाँ पे आप क्या लिखोगे m को डिनोट करोगे, which is equal to 1/4 pi epsilon m. Again Q1 and Q2 divided by R square will remain same. Then after that you should go for its ratio or divide these two terms. Which terms? Equation 1 and this is your equation number 2. Clear? तो अब आपने क्या करना है, इस रेशियो को फाइंड आउट करना है em divided by e naught here, क्योंकि em divided by e naught किसको रिप्रेजेंट करता है, that is epsilon r, your relative permittivity. So you should go for a f naught divided by fn. इसको डिवाइड कीजिए. Yes, who will do the first? Simply these two equations are given here. You should use the value of forces directly from your upper equations and you will get the final result. देखिए, I will do here like this. Similar terms can be cancelled out from here. Then how you will write in the next step? Yes, who will tell me how you will write this value in the next step? F naught divided by Fm, which is equal to your 1/4 pi epsilon naught, और ये जो है आपका न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा epsilon m divided by 1. This can be cancelled out and this is equal to epsilon m divided by epsilon r. बट हमें क्या करना है, हमें पता है कि epsilon r की वैल्यू क्या होती है. Yes, epsilon r is equal to epsilon r, which is equal to epsilon m divided by epsilon naught, or epsilon m is equal to epsilon naught into epsilon r, relative permittivity. तो अब ये रेशियो सेम आ रही है. You can write here f naught upon fm, which is equal to epsilon r, that is relative permittivity. So this is your final ratio. Or if you need to find the value of the fm, अगर आपके पास एक फोर्स की वैल्यू गिवन है, then you can use the value of the relative permittivity. तो वहां से आप another force की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, which is lying in the medium. So these are the terms which you are using for your numerical purposes or some applications and some experimental applications. कि वहां से आप अपनी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो. अगर फोर्स की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है, देन फोर्स यू कैन इजीली फाइंड आउट इन द मीडियम हियर. क्लियर? सो इन तीनों टर्म्स में से अगर कोई भी दो वैल्यूज गिवन है तो आप थर्ड टर्म जो है वो क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे. इट इज सफिशिएंट. सो रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो. और कल हम क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के बेस्ड सम न्यूमेरिकल्स और सम एप्लीकेशंस व्हिच इज बेस्ड ऑन योर रिलेटिव परमिटिविटी. तो आपने क्या करना है, अपने कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से रीड करना है एंड उसकी एप्लीकेशंस को रीड करना है एंड सम क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू योर कूलम्स लॉ. थैंक यू.